control. Bella kar under control. Puri building mein shore. Bella kar under control. In sabko rehna hai mere close. Lakhon mein bike mere pose. I'm on a show. हेलो। आज को हम लोग बात करेंगे, एक सेकेंड। हेलो। आज को हम लोग बात करेंगे अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर। नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ ठाकुर एज वी से, लाइक about him or something like that. We will talk, or rather we will read his book Nationalism. I'll try to complete the book in this stream. I'm not sure if I will able to complete it, because इसके पहले मैं जो भी बुक वगैरह पढ़ा हूँ, well it never completes actually. like हम जितना बार पढ़ने का कोशिश करता हूँ, like it, okay, let me show you something. okay, एक सेकेंड, क्या हो रहा है? Okay, this is my channel and this is my live streams. This is Umar Khalid wala stream. This is those stream हम जो किए थे after I got a strike, but I'm not showing you these things. I'm gonna show you this. Okay, B.R. Ambedkar waiting for a visa, chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, chapter 6 एंड टोटल मिला के हम ये एक वीडियो एडिट करके अपलोड किए हैं, दैट इज़ 2 hours 30 minutes लॉन्ग. एक्चुअल विदाउट एडिट कुछ 4 घंटा लंबा था, एंड 4 घंटा से ज़्यादा लंबा था टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज एक तो बहुत सारा इंट्रो एंड आउट्रो पार्ट एडिट करके आउट किए हैं, उसके बाद बीच में कभी चेयर छोड़ के उठ गए थे, वो वाला पार्ट आउट किए हैं. उसके बाद आई लाइक gasped and like talked about different other things, उसको out किए हैं. and also I sped the whole clip by like 8 or 10%. तो उसके बाद हमको कुछ 2 घंटा 30 मिनट कंप्लीट हुआ है, and that is this book. okay, ये बुक पे कुछ, एक सेकेंड, 47 पेजेस है, and the book I'm reading today is somewhat 109 pages long. I'll try to complete it, but most probably ये एक दिन में complete होने का chance नहीं है, but I'll try it. Let's go. Okay, let's go. And what is the update of, what is the update of my copyright strike? घंटा कुछ नहीं हुआ, ठीक है. हम बहुत ज़्यादा हाइप करके लाइक एक मेल किए थे यूट्यूब को, बट लाइक नथिंग रियली हैपेंड एक्चुअली. दैट इज़ फकिंग सैड. एक सेकंड देख लेते हैं स्ट्रीम अच्छा खासा चल रहा है कि नहीं चल रहा है. इमेज क्यों खोल जा रहा है बेंचो? फक ऑफ. somebody is watching it already. who is watching it? मेल किए थे यूट्यूब को, बट लाइक नथिंग रियली हैपेंड एक्चुअली. दैट इज़ फकिंग ओके. फक, रुक जाओ, शुरू करते हैं. ओह शिट, एक सेकंड, क्या कर दिया? सॉरी. एक wait 1 second. okay, 1 second, give me 1 second time. ओके, थोड़ा बहुत रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में देख लेते हैं. हु वाज रविंद्रनाथ टैगोर? ठीक है,
Rabindranath Tagore, as we call in Bengali Kobi Guru Rabindranath Thakur, uh, was a Bengali poet, writer, playwright, composer, philosopher, social reformer, painter of the Bengal Renaissance. ये हम देख देख के बोल रहे हैं, हमको मतलब ऐसे हमको पता है. Not that I don't know about Ravi Thakur. Okay. He reshaped Bengali literature and music as well as Indian art with contextual modernism in late 19th and early 20th centuries. He was born in Jorasako, Thakurbari, Kolkata. In Bengali we say it জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর. Yeah. He died in 7th August 1941 at the age of 80 years old in his house. His wife's name was Mrinalini Devi and his parents was Devendranath Thakur and Sarada Devi. Okay, chalo. Let's watch. Okay. Let's read his book. Let's start reading the book because अभी start नहीं करेंगे तो खत्म हो नहीं पाएगा आज. चलो. I hope I'm audible. Actually, I have no idea. Am I audible? एक सेकंड. बहुत ज़्यादा uncomfortable लग रहा है. Give me 1 second, okay? Give me 1 second. A Bengali polymath who reshaped Bengali literature, music, and Indian art with contextual modernism in late 19th and early 20th century. Rabindranath Tagore became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913. Born in Kolkata in 1861 to parents Debendranath Thakur and Saruta Devi, he was raised mostly by servants. The Tagore family was at sorry, मेरा वॉइस थोड़ा ज़्यादा ही पतला लग रहा है ना आज को. I don't know. ये वाला इंट्रो तेरी
Excuse me for my problem, okay? Sorry. एक्चुअली क्या हुआ, मैं जिम मैट लगाए हुए हैं, ठीक है, मैं जिम मैट लगाए हुए हैं, तो what happens as I sit on it with a chair and stuff, so मतलब बड़ा हो गया, ठीक है, एंड फिट नहीं हो रहा है, एंड एज फिट नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है बोलो तो ये माइक का स्टैंड जो है बहुत ज़्यादा, हाँ fuck it. Introduction to the author, okay? A Bengali polymath who reshaped Bengali literature, music, and Indian art with contextual modernism in late 19th and early 20th centuries, Rabindranath Tagore or Rabindranath Tagore became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913. Born in Calcutta in 1861 to parents Debendranath Tagore and Saroda Devi, he was raised mostly by servants. The Tagore family was at the forefront of Bengali Renaissance. They were regular hosts of the publication of literary magazine, theatre, and recitals of Bengali and Western classical music. Tagore avoided classroom schooling and loathed formal education. मतलब ये वाला पार्ट समझ में आ रही है सारे. He was born in Kolkata, in Thakurbari, Jorasako. His parents were Devendranath Thakur and Saruda Devi. He was born in 1861 and he died in 1941. वो वाला पार्ट इधर नहीं लिखा हुआ है, वो वाला पार्ट हम विकिपीडिया से देख के बोल रहे थे उस टाइम पे, राइट? And he didn't like formal schooling. Like, if anybody talks about Rabindranath Tagore, it is one of the top 10 things that they say, that he did not study in formal schooling, he did not like formal schooling, and that's why he was homeschooled. His brother tutored and physically conditioned him. He learned drawing, anatomy, geography, history, literature, mathematics, Sanskrit, and English. His least favorite subject. Okay, so English is his least favorite subject. So he learned drawing, anatomy, geography, history, literature, mathematics, and Sanskrit. Mathematics, Sanskrit, and English, his least favorite subject. His scholarly his scholarly travels at the local presidency college spanned a single day. Years later, he held that proper teaching does not explain things but strokes curiosity. Tagore's father warned him to become a barrister, so he enrolled at a public school in Bridgeton, East Sussex, England in 1878, but returned to Bengal degreeless in 1880s, resolving to reconcile with English novelty. Okay, sorry, एक second. Resolving to reconcile English novelty with Brahmo traditions. He married Mrinalini Devi in 1883, with whom he had 5 children, 2 of whom died in childhood. So basically, he did not like formal education. He was sent to Presidency College, but he only attended the college for a day and he came back. And then he was enrolled in a public school in Bridgeton, East Sussex, England in 1878. 1878 पे ईस्ट ससेक्स पे एक कॉलेज पे उनको भर्ती किया जाता है, but he returned to Bengal degreeless in 1880s. 2 साल के अंदर he returned home, resolving to reconcile English traditions, English novelty with Brahmo tradition. He married Mrinalini Devi. He married his wife in 1883 and had 5 children, 2 of whom died in childhood. Basically, he had 5 children, but like 2 of his children died in childhood.
Tagore's sadhana period 1891 to 1895, named after one of his magazines, was his most productive. He wrote more than half the stories of 3 volume 84 Golpogucho in these years. So टेगर साधना पीरियड का टाइम फ्रेम है 1891 से 1895. Named after one of his magazines, was one of his productive. रविंद्रनाथ टैगोर का जो साधना पीरियड था was one of his most productive period of his life. He wrote more than half the stories of the 3 volume, that is 84 stories, called Golpogucho in these years. Golpogucho is a like story novel that he uh, released, that was 3 volume long, and वो 3 volume पे कुछ 84 stories था. एंड ये 3 volume के अंदर आधा कहानियाँ इस 4 साल पे 1891 से 1895 पे टैगोर ने लिखा था. He moved to Santiniketan in 1901 to found an ashram with a marble floored prayer hall, the mandir, and experimental school, groups of trees, gardens, a library, etc. So he moved to Santiniketan in 1901. There he formed an experimental school, and in that school there was a marble floored prayer hall called mandir, an experimental school, groups of trees, gardens, libraries, etc. These things were present in the school. Okay. He lost his wife and 2 children there. In 1905, his father also died. So basically, he lost his wife and 2 children in Santiniketan, and after a few years, his father also died. Tagore published Naivedya in 1901 and Khea in 1906, and translated poems into free verse. He gained Bengali and foreign readers alike. Gitanjali, the original Bengali collection of 157 poems, was published in August 1910. The English Gitanjali, or Song Offering, a collection of 103 poems, which he himself translated from Bengali, was published by Indian Society of London in November 1912. It contained translations of 53 poems from the original Bengali Gitanjali, as well as 50 other poems which were from his drama Achalachittyam, and 8 other books of poetry. Basically, okay. So basically, he translated a book called the English Gitanjali, in which it had 103 poems. And in this book, there was 53 poems that he took from his original Gitanjali and put in it. He also put a lot of other poems into this book. 50 other poems were taken from different places, like his drama called Achalachathyam and 8 other books of poetry से ये सारे poems लेके इस book पे English गीतांजलि पे टैगोर पोस्ट किया. Tagore won the Nobel Prize in Literature in November 1913. November 1913, he gets Nobel Prize. The British Crown granted Tagore a knighthood in 1915. British log, the colonial rulers, provided Rabindranath Tagore the
knighthood, or in Bengali we call it the knight upadhi. Tagore set foot. Okay, fuck off. Kuch bhi. Okay, so he rejected the knighthood because as a protest of the Jallian Wala Bagh massacre. Okay, ये वाला part इधर नहीं लिखा हुआ है for some fucking reason. Rabindranath Tagore is not known as Knight Rabindranath Tagore for a reason. He rejected the knighthood as a sign of protest against the Jallian Wala Bagh massacre. Okay. On 29th May 1919, Nobel laureate Rabindranath Tagore, in protest against the horrifying Jallianwala Bagh massacre, composed a letter addressed to the Viceroy of India, Lord Chelmsford. Chelmsford, okay, beseeching him to renounce the knighthood bestowed upon Rabindranath Tagore by the British monarch in 1915. Okay, so basically, when he was provided with the award, he took it, and after Jallianwala Bagh massacre happened, and he rejected the award as a protest. Okay, true. Tagore set foot in more than 30 countries on 5 continents between 1878 and 1932. He took a sheaf of his translated work to England in 1912, where they gained attention from missionary and Gandhi protege Charles F. Andrews, Irish poet William Butler Yeats, Ezra Pound, Robert Bridges, Ernst Rhys, Thomas Sturge Moore, and others. So basically, he took a piece of his translated work on England in 1912, where they got attention from the missionary and Gandhi protege. Do you call it protege or एक सेकेंड प्रोटेजे बोलते हैं क्या? PROTEGE. A person who is guided and supported by. Okay, so basically disciple type का है, ठीक है, or rather like I don't know, from missionary and Gandhi protege. Okay, pronunciation देख लेते हैं. Protege. Protege. Okay. So, okay. तो एक लाइन पहले से पढ़ते हैं. He took a sheaf of his translated work to England in 1912, where they gained attention from missionary and Gandhi protege Charles F. Andrews, Irish poet William Butler Yeats, Ezra Pound, Robert Bridges, Ernest Rhys, Thomas Sturge Moore, and others. So basically, ये सारे जो poets थे, इन लोग के पास like रविंद्रनाथ टैगोर के वर्क पॉपुलर हुआ. In the same year, Yeats wrote the preface to English translation of Gitanjali, and Andrews joined Tagore at Santiniketan. He lectured in Japan. Fuck. जापान का प्रोनाउंसिएशन कैसे हो गया? जापान? जापान? Fuck. एक सेकेंड. जापान. राइट. जापान. सो क्या हो रहा है, मतलब मैं इंग्लिश कुछ बंगाली वर्ड्स है, राइट, लाइक तो मेरा बंगाली एक्सेंट और इंग्लिश एक्सेंट वाला लाइक मिक्स हो जा रहा है. बंगाली यू कॉल इट जापान एंड इंग्लिश यू कॉल इट लाइक जापान.
तो दोनों थोड़ा कंफ्यूजेशन होगी, कंफ्यूजेशन, आज क्या हो रहा है भाई, कंफ्यूज हो गए थे. He lectured in Japan, fuck. He lectured in Japan and the United States from May 1916 to April 1917 and denounced nationalism. His essay, Nationalism in India, was scorned and praised. Tagore is known mostly for his poetry through. Fuck. Excuse. Tagore is mostly known for his poetry, though he wrote novels, essays, short stories, travelogues, dramas, and thousands of songs. His works are noted for their rhythmic, optimistic, lyrical nature. Tagore wrote autobiographies and his non-fiction grappled with history, linguistics and spirituality. तो क्या बोल रहे हैं? Tagore is mostly known for his poetry, though he wrote novels, essays, short stories, travelogues, dramas, and thousands of songs. Basically, रविंद्रनाथ टैगोर को ज़्यादातर पोएट की तरह से हम लोग जानते हैं, बट ही रोड अ लॉट ऑफ नॉवेल्स, एसेज, शॉर्ट स्टोरीज, ट्रैवलॉग्स मतलब हम लोग जो अभी ब्लॉग करते हैं ना, वैसा ही, मतलब तुम जब घूमने जाते हो, यू राइट स्टफ दैट यू लाइक, यू राइट लाइक क्या क्या देखते हो, व्हाट आर द एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव. इनफैक्ट लाइक इवन फ्यू ईयर्स बैक, लाइक फ्यू मतलब मैं बहुत छोटे थे उस टाइम पे, मतलब in my lifetime also I saw those, right? Like there were like these books, my mom used to like take weekly of these books called Saptahik Bortoman. Okay. uh, when like in these books, like there would be like people who used to like travel places, and they used to write their experiences, what they're seeing there, what hotel they are like arriving, or the people they made, like basically vlogs, but like in more of a like written sense, not a like recorded sense, right? Dramas and thousands of songs. तो ये सारी चीज़ वो लिखते थे, बट फिर भी he is mostly known for his poets, or rather poems. Tagore wrote autobiographies and his non-fiction grappled with history, linguistics and spirituality. मतलब he wrote his own autobiography, मतलब autobiography अपने ही होता है, and his non-fiction grappled with, मतलब जो काम उनका fiction नहीं होता था, वो क्या क्या टॉपिक के ऊपर होता था? हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी. His travelogues, essays and lectures were compiled into several volumes. Harvard University Press collaborated with Biswa Bharati University to publish the Essential Tagore, the largest anthology of Tagore's work available in English in 2011. It marks the 150th anniversary of Tagore's birth. A prolific composer of music, Tagore had 2,230 songs to his credit, known as Rabindranath bracket Tagore's song. They were merged fluidly into his literature, most of which poems or parts of novels, stories or plays alike were lyricized. मतलब बहुत सारा poems को lyricize किया गया था अपने गानों में, बहुत सारा novel stories को भी ये गानों में lyricize करते थे रविंद्रनाथ ठाकुर, or Tagore as they like to say. He wrote 8 novels and 4 novellas. I don't know what the fuck is that. He wrote 8 novels and 4 novellas.
So it's written that no novella, novella, a short novel or a long short story. Okay, a short novel मतलब एक नोवेल के लाइक रेस्पेक्ट में शॉर्ट है पर एक स्टोरी के रेस्पेक्ट में लॉन्ग है. बट लाइक आई थिंक इट इज़ लाइक it's supposed to write like long story but short novel. Okay, I got it. Okay. So basically, he wrote 8 novels and 4 novellas. Tagore opposed imperialism and supported Indian nationalists. And these views were first revealed in Manasat, which was mostly composed in his 20s. He criticized the Swadeshi movement and rebuked it in his 1925 essay, The Cult of the Chakra. Okay, that's cool. Like, everybody is against Gandhiji. He criticized the Swadeshi movement and rebuked it in his essay 1925. In his 1925 essay, The Cult of the Chakra. He saw the presence of Bengal. That क्या कर रहे हैं? थोड़ा पीछे से पढ़ते हैं, ठीक है? Tagore opposed imperialism and supported Indian nationalists, and these views were first revealed in Manasat, which was mostly composed in his 20s. He criticized the Swadeshi movement and rebuked it in his essay written in 1925 called The Cult of the Chakra. He saw the presence of British administration as a political symptom of our social disease and urged the masses to avoid victimology and instead seek self-help and education. Okay. He saw the presence of British administration as a political symptom of our social disease and urged the masses to avoid victimology, मतलब victimhood जिसको हम लोग अभी बोलते हैं, and instead seek self-help and education. The last 5 years of Tagore's life were marked by chronic pain and 2 long periods of illness. मतलब लास्ट 5 साल में एक chronic pain मतलब एक continuous pain and 2 साल दर्द एंड पीड़ा के साथ 2 long periods of illness में गुजरा था. In late 1937, he had lost consciousness and remained comatose and near death for a time. Late 1937 पे वो अपने आप को like he lost his consciousness, मतलब अपने आप का consciousness जो मतलब बंगाली call it ज्ञान हारी जावा, I don't know what हिंदी में मतलब मैं थोड़ा भूल गए हैं. Like you basically you understand the point, right? And stayed comatose and near death for a time. For a time frame, he was in a comatose state, मतलब कोमा में चले गए थे and like near death condition पे थे, basically speaking. This was followed by a similar spell in late 1940s and he never recovered. Tagore died in 7th August 1941, aged 80, in the upstairs room of Jorasako Mansion where he was raised. Okay. तो क्या बोल रहे हैं? ऐसे एक सिमिलर सिचुएशन हुआ लेट 1940s पे जिसके बाद वो कभी रिकवर ही नहीं किए. एंड he died in 7th August 1941, aged 80, in the upstairs room of Jorasako Mansion where he was raised. मतलब जिस रूम पे जिस घर पे वो रेज हुए थे उसी लाइक हाउस का अपर स्टेयर्स पे उनका डेथ होता है.
80 साल का उम्र में। एक सेकंड रुक जाओ, हम देखते हैं कि कौन कितना चैप्टर है। देयर इज नो लाइक contents or something like that in the book. Okay, so ये बुक पे 3 चैप्टर है मेन। नेशनलिज्म इन जापान, nationalism in Japan, nationalism in the West, and nationalism in India. ये 3 चैप्टर है। आई विल ट्राई टू कंप्लीट द nationalism in Japan. Okay. The worst form of bondage is the bondage of dejection, which keeps men hopelessly chained in loss of faith in themselves. We have been repeatedly told with some justification that Asia lives in the past. It is like the rich mausoleum which displays all its magnificence in trying to immortalize the dead. Okay. The worst form of bondage is the bondage of dejection. I have no idea what he is saying here actually. हम इसीलिए bond like dejection का मतलब है एक सेकेंड। डिजेक्शन का मतलब है a sad and depressed state, low spirits. Okay. So इधर टेगोर लिख रहे हैं the worst form of bondage is the bondage of dejection which keeps men hopelessly chained in loss of faith in themselves. We have been repeatedly told with some justification that Asia lives in the past. It is like a rich mausoleum which displays all its magnificence in trying to immortalize the dead. मतलब सबसे पहले बोल रहे हैं one of the worst form of bondage क्या है? The bondage of dejection, a sad state of like bondage है like I have no idea क्या बोल रहे थे, ठीक है, to be honest. Which keeps men hopelessly chained. He is saying that this form of bondage keeps men आदमी को होपलेसली चेंड करके रखता है, बांधे रखता है इन लॉस ऑफ फेथ इन देमसेल्व्स, अपने आप से विश्वास करने में लाइक ये रोकता है। एंड जो भी सैड स्टेट में वो बंदा है उसी में उसको रोक के रखने का और उसी में उसको बांध के रखने का लाइक काम करता है बेसिकली। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग हियर। वी हैव बीन टोल्ड रिपीटेडली विथ सम जस्टिफिकेशन, हम लोग को कुछ जस्टिफिकेशन के साथ बार बार बोला गया है दैट एशिया लिव्स इन द पास्ट। इट इज़ लाइक अ रिच mausoleum which displays all its magnificence in trying to immortalize the dead. So basically ये बोला जाता है कि एशिया ऐसे एक सभ्यता है या एशिया में जितने सभ्यता हैं वो ये करते हैं कि
जो भी एक रिच मौजोलियम टाइप का, एक रिच म्यूजियम टाइप का है, जहाँ पर जो भी पुराने चीज़ें हैं उसको बहुत अच्छा से सजा के रखते हैं, ताकि लाइक जो भी चीज़ें हैं उसका लाइक डेथ ना हो जाए, इसको लाइक जो भी मर चुके हैं उसको लाइक जिंदा करके रखने का कोशिश होती है, या समथिंग लाइक दैट, राइट. It is said of Asia that it could never move in the path of progress. Its face was so inevitably turned backwards. We accepted this accusation and came to believe it. In India, I know a large section of our educated community grown tired of feeling the humiliation of this charge against us, is trying all its resources and self deception to turn it into a matter of boasting. क्या लिख रहे हैं? In India, I know a large section of our educated community grown tired of feeling the humiliation of this charge against us. मतलब जो एशिया के बारे में बोला जाता है वो चार्ज लाइक इंडिया या इंडियंस के ऊपर भी लगता है, एंड ही इज सेइंग दैट इंडिया ये चार्ज को लेके खुश नहीं है, एंड मतलब जो एजुकेटेड कम्युनिटी है दे आर लाइक टायर्ड ऑफ दिस लाइक एक्यूजेशन, is trying all its resources of self deception to turn it into a matter of boasting. So he is saying कि जो लोग एजुकेटेड कम्युनिटी है, जो भी है, जो लोग ह्यूमिलिएटेड है, जो लोग जो लोग टायर्ड है ये एक्यूजेशन के ऊपर, वो लोग इसको घुमा के सेल्फ डिसेप्शन के तरीके से इसको बोस्टिंग या इसको लाइक एक प्राउड थिंग में कन्वर्ट करने का कोशिश करता है. बट बोस्टिंग इज ओनली ए मास्क शेम. इट डज नॉट ट्रूली बिलीव इट इन हिमसेल्फ. सो इज सेइंग कि ये बोस्टिंग एक मास्क शेम है, एक शर्म है, जो कि लाइक खुद में ही बिलीव नहीं करता है. When things stood still like this, and we in Asia hypnotized ourselves into the belief that it could never, by any possibility, be otherwise. Japan rose from her dreams and, in giant strides, left centuries of inaction behind, overtaking the present time in its foremost achievement. When things stood still like this, we in Asia hypnotized ourselves into the belief that it could never, by any possibility, be otherwise. Japan rose from her dreams and, in giant stride, left centuries of inaction behind, overtaking the present time in its foremost achievement. तो क्या बोल रहे हैं? जब एशिया में सारे लोग ऐसे थे, सारे कंट्रीज ऐसे थे, जापान अपने इतना साल का इनएक्शन को पीछे छोड़ के अपने सपना से उठ के लाइक जायंट स्ट्राइड्स, मतलब लाइक लॉन्ग स्टेप्स करके, मतलब बहुत जल्दी अपने इतना साल जो इनएक्शन हुआ, इतना साल जो कुछ नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ, कुछ इम्प्रूवमेंट अचीवमेंट नहीं हुआ, वो सारे को पीछे छोड़ के बहुत आगे चला गया. ओवरटेकिंग द प्रेजेंट टाइम इन इट्स फॉरमोस्ट अचीवमेंट. This has broken the spell under which we lay in torpor for ages, taking it to be normal condition for certain races living in certain geographical limits. We forgot that in Asia great literature flourished and all great religions of the world had their cradles. Therefore, it cannot be said that there is anything inherent in the soil and the climate of Asia to produce mental inactivity and to atrophy the faculties which impel men to go forward. तो क्या बोल रहे हैं? Therefore, it cannot be said of Asia to produce mental inactivity and the atrophy the faculties which impel men to go forward. मतलब बोला जा रहा है कि
ये सोचने का कोई कारण नहीं है कि एशिया एक सिर्फ ऐसे जगह है जो लाइक कोई मेंटल ग्रोथ किधर उधर नहीं होता है, कोई कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि सारे रिलीजियंस जो है इधर से ग्रो किया है, सारे फिलोसफीज लिटरेचर्स इधर से ग्रो किया है, बट इन द सेम प्लेस वाई एशिया इज लाइक दैट. For centuries, we did not hold torches of the civilization in the East, where the West slumbered in darkness, and that could never be the sign of sluggish mind or narrower vision. मतलब बोल रहे कि for centuries we did hold the torches of civilization, like शतकों के लिए, like for centuries, जो ईस्ट है, इस मतलब जो एशिया या एशियाटिक कंट्रीज़ है, वो होल्ड द टॉर्चेस ऑफ द सिविलाइजेशन, मतलब सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाया है. When the West slumbered in darkness, and that never could be the sign of sluggish mind or narrower vision. मतलब ये तो, ये अगर इतना सालों तक आगे बढ़ाया है मतलब सिविलाइजेशन को, तब ये तो नहीं हो सकता है कि ये लोग का नैरो विजन था, ये स्लगिश मतलब लाइक आलसी माइंड था. पर इन द सेम प्लेस वेस्ट उस टाइम पे डार्क था, उस टाइम पे वो लोग नहीं ग्रो किया था, पर ईस्ट ही civilization को आगे बढ़ाया था. That's what he is saying here. Then fell the darkness of night upon all the lands of the east. The current of time seemed to stop at once, and Asia ceased to take any food, feeding upon its own past. मतलब बोले जा रहा है कि उसके बाद एशिया के ऊपर एक डार्कनेस आ गया, एक अंधेरा आ गया, रात आ गया, एंड जो भी पुराना खाना एशिया बना के रखे थे इतना सालों से, इतना शतकों से, वो खाना शुरू किया, एंड कोई नया खाना बनाना बंद कर दिया. यहाँ पर खाना इज़ अ मेटाफर Tagore is using to like explain the new achievements of each country or each people of this region. The stillness seemed like death, and the great voice was silence, which was sent forth messages of eternal truth that have saved man's life from pollution from generations, like the ocean of the air that keeps the earth sweet, ever cleansing its impurities. क्या बोल रहे? The stillness seemed like death, and the great voice was silenced, which was sent forth messages of eternal truth that have saved man's life from pollution for generations. मतलब जो साइलेंस हो गया, जो स्टीलनेस हो गया, वो लाइक डेथ जैसे लगने लग गया, एंड जो ग्रेट वॉइसेस जो था वो लोग को साइलेंस कर दिया गया, जो एक मैसेज भेजा कि and the great voice was silence, which sent forth messages of eternal truth का ये एक संदेश भेजा, that have saved man's life from pollution for generations, like the ocean of the air that keeps earth sweet. मतलब जैसे कि जो वायुमंडल है, जैसे अर्थ को लाइक हैबिटेबल बनाता है, स्वीट बनाता है, एंड सारी जो इम्प्यूरिटीज़ है उसको क्लीन करता है, वैसे ही ये था. But life has its sleep, its period of inactivity when it loses its movement, takes no new food, living upon its past storage. मतलब पर लाइफ पे हम लोग सभी कुछ पीरियड में सो जाते हैं, कुछ पीरियड हम लोग का इनएक्टिव होता है, कुछ पीरियड में हम लोग अपने मूवमेंट को खो देते हैं, एंड कोई नया खाना या इस मेटाफर फॉर नया अचीवमेंट नहीं कर पाते, एंड अपने जो पास्ट स्टोरेज है, अपने जो पास्ट कर्म है, अपने जो पास्ट एक्शंस है, उसी के ऊपर रहना शुरू करते हैं. Then it grows helpless, its muscles relaxed, and it easily lends itself to be jeered at for its stupor. क्या लिख रहे हैं? Then it grows helpless, its muscle relaxed, and it easily lends itself to be jeered at for stupor. एक stupor का मतलब देख लेते हैं. A state of near unconscious or insensibility. मतलब बोल रहे हैं कि जब हम लोग
ऐसे एक फेज़ के थ्रू जाते हैं, हम लोग का मसल रिलैक्स हो जाता है, हम लोग उठ नहीं पाते, हम लोग बेड पे सोए हुए रहते हैं, हम लोग हेल्पलेस हो जाते हैं। एंड इट इजीली लेंस itself टू बी jeered at फॉर इट्स trouble। मतलब ये जो अनकॉन्शियस स्टेट है, इसके मतलब इसमें हम लोग वल्नरेबल हो जाते हैं। इन द रिदम ऑफ लाइफ पॉजेज देयर मस्ट बी फॉर द रिन्यूअल ऑफ लाइफ। मतलब जब ये जो लाइफ के रिदम में जब भी पॉज आते हैं, वो एक नया स्टोरी का संकेत होती है। लाइफ इन इट्स इनएक्टिविटी इज एवर स्पेंडिंग itself burning all its fuels। मतलब लाइफ जब इनएक्टिव होता है, वो हम लोग का सारे फ्यूल, मतलब सारे जो जो भी है, पैसा हो सकता है या सोशल अचीवमेंट हो सकती है, ये सारे बर्न करते हैं टू लिव ऑन। द एक्स्ट्रावेगेंस कैनॉट गो इनडेफिनेटली। मतलब अगर हम लोग पैसे के कॉन्टेक्स्ट पे भी बात करें, तो हम लोग जितना भी पैसा कमा लें, ऐसे नहीं हो सकती कि हम लोग काम करना बंद कर दें एंड हम लोग का घर चलता रहे बहुत एक्स्ट्रावैगेंटली। हम लोग को अपना एक्स्ट्रावैगेंस को कम करना पड़ेगा टू लिव आवर लाइव्स, और वी हैव टू डू सम मोर वर्क। दैट्स बेसिकली व्हाट इट्स सेइंग। दिस एक्स्ट्रावैगेंस कैनॉट गो indefinitely, but it always followed by a passive stage when all expenditure is stopped and all adventures abandoned in favor of rest and slow recuperations। मतलब बोला जा रहा है कि ये जो पैसिव स्टेज के बाद ऑलवेज एक टाइम आता है जब क्या लिख दिस एक्स्ट्रा, बट इट ऑलवेज फॉलोड बाय अ पैसिव स्टेज व्हेन ऑल एक्सपेंडिचर इज स्टॉप्ड एंड ऑल एडवेंचर अबंडन इन फेवर ऑफ रेस्ट एंड स्लो रिक्यूपरेशन। मतलब इसके बाद एक स्टेज आती है जहाँ पर हम लोग को खर्चा घटाना पड़ता है। अगेन टेकिंग द मनी रेफरेंस और मनी मेटाफर, अगर हम लोग बहुत देर तक, बहुत सालों तक काम नहीं कर रहे हैं, अपने पुराने पैसे में जी रहे हैं, तो हम लोग को अपने खर्चा को घटाना पड़ता है। सारे जो एडवेंचर्स है, नया जगह घूमना होता है, कोई कोई नया हॉबी होता है, वो सारे कटना पड़ता है। एंड स्लोली एंड स्टेडीली हम लोग को ग्रो करना पड़ता है टू अर्न मोर। बेसिकली हम मनी का रेफरेंस से हम समझ पा रहे हैं। आई एम नॉट गेटिंग व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट, मतलब क्या कॉन्टेक्स्ट में ये बोला जा रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है, बट ओके। द टेंडेंसी ऑफ माइंड इज इकोनॉमिकल। इट लव्स टू form habits and move in grooves which save it and the trouble of thinking anew at each of its step। The tendency of mind is economical। मतलब हम लोग इकोनॉमिक वे से सोचते हैं। It loves to form habits and move in grooves which save it from the trouble of thinking anew at each step। मतलब हम लोग थोड़ा सा ऑफ मोड पे चलना पसंद करते हैं, थोड़ा सा पैसिव मोड पे चलना पसंद करते हैं। हम लोग हर स्टेप पे, हर लाइफ का नया मोड पे न्यू डिसीजन लेना पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए थोड़ा सा एक हैबिट फॉर्म करने का आदत होती है हम लोग को, सो दैट वी डोंट हैव टू फॉर्म अ एक्टिव डिसीजन एवरी टाइम वी टेक अ न्यू स्टेप। आइडियल्स वंस फॉर्म्ड मेक द माइंड लेजी। बट इसलिए एक आइडियल फॉर्म हो जाते हैं, तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं, माइंड लेजी हो जाता है। इट बिकम्स अफ्रेड टू टेक रिस्क इट्स accusations in fresh endeavors। It tries to enjoy complete security by shutting up its belongings behind fortifying fortifications of habits। एक सेकंड रुक जा, हम I'll repeat it। The tendency of mind is economical. It loves to form habits and more in grooves which save it the trouble of thinking anew at each step। Ideas once formed make the mind lazy। It becomes afraid to risk its accusations in fresh endeavors। मतलब fresh adventure के लिए, fresh endeavor के लिए जो नया रिस्क लेना पड़ता है, वो करने में लोग डरता है। जब एक बार एक आदत हो जाती है, एक लेजी ग्रोथ का आदत हो जाती है, पीपल आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग अ न्यू एडवेंचर और न्यू endeavor। It tries to enjoy complete security by shutting up
its belongings behind fortifications of habits. क्या? It tries to enjoy complete security by setting up its belongings behind the fortifications of habits. मतलब हैबिट का चार दीवारी के अंदर से वो जो नया एडवेंचर, नया रिस्क टेकिंग का चीज़ है, उसको वो हैबिट का चार दीवारी के बाहर धकेल के अपने आप को सिक्योर फील करना का कोशिश करता है, करने का कोशिश करते हैं. मतलब बेसिकली क्या बोल रहे हैं, हम लोग एक आदत में चलते हैं. हम लोग सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, उसके बाद लेट्स से वी टॉक विद फैमिलीज, ऑफिस जाते हैं, घूम के आते हैं, राइट. उसके बाद मान लो कि बच्चे का समर वैकेशन आ गया, या जो भी फैमिली मेम्बर्स जो भी है, अपना छुट्टी है, वाइफ का छुट्टी है, लेट्स से हम लोग घूमने जाते हैं वही एक दो जगह में. हम लोग वही एक दो जगह में लाइक अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहने का कोशिश करते हैं. वी स्टॉप टेकिंग न्यू एडवेंचर्स, वी स्टॉप टेकिंग न्यू इंडेवर्स. लाइक हम लोग का हैबिट के अंदर ही हम लोग गिर जाते हैं एंड उसी को सेफ सोचते हैं. दैट्स व्हाट इट इज सेइंग. स्प्राइट में कितना कैलोरीज होता है? एक सेकेंड, स्प्राइट में कितना कैलोरीज होता है? 49 कैलोरीज पर 100 ml. ये 750 ml है. एक सेकेंड, कितना कैलोरीज पी लिए हम? व्हाट द फक? एक सेकेंड भाई, रुक जाओ. आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी. ओके, 360 कैलोरी पी लिए बैठ के. फक. ओके, तो वही बोल रहा है कि तो वही बोल रहे हैं, हम लोग जब एक आदत डाल लेते हैं, उसके बाद उससे निकल के, उससे एक दो दिन या कुछ देर के लिए ब्रेक करके नया आदत फॉर्म करना, या नया कुछ इंडेवर्स लेना, कुछ चैलेंजेस लेना लाइफ के लिए, वो हम लोग एकदम ही से बंद कर देते हैं. वो हम लोग एकदम ही से लाइक करना छोड़ देते हैं. बट दिस इज़ रियली शटिंग वन सेल्फ अप फ्रॉम द फुलेस्ट एन्जॉयमेंट ऑफ वंस ओन पोसेशंस. मतलब ये करने से हम लोग अपने आप को एक सेफ तो फील करते हैं, पर हम लोग अपने आप का लाइफ का लाइक फुलेस्ट एन्जॉयमेंट नहीं ले पाते हैं. इट इज़ miserliness. The living ideals must not lose their touch with the growing and changing life. The living ideals must not lose their touch with the growing and changing life. Their freedom, their real freedom is not within the boundaries of security, but the high road of adventures full of risk, of new experiences. क्या बोल रहे हैं? द रियल फ्रीडम इज़ नॉट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ सिक्योरिटी. मतलब रियल फ्रीडम जो है वो सिक्योरिटी का बाउंड्री के अंदर नहीं हो सकता है. उसके लिए रिस्क लेना पड़ता है. उसके लिए हाई लाइक एडवेंचर का जो हाई रोड है उधर लेना पड़ता है. लाइक एक न्यू एक्सपीरियंसेस के गेन करने के लिए हम लोग को कुछ रिस्क लेना पड़ता है, लाइक कुछ एडवेंचर्स करना पड़ता है, एंड अपने आप को लाइक सिक्योर करके हैबिट्स का चार दीवारी के अंदर अगर रहेंगे तो नहीं होता है. One morning, the whole world looked up in surprise when Japan. One morning, the whole world looked up in surprise when Japan broke through her walls of old habits in a night and came out triumphant. Triumphant. मतलब
ट्राइम्फेंट का मतलब होती है कि लाइक व्हेन यू विन और व्हेन यू लाइक गेन, और बेसिकली इधर लाइक विक्टोरियस बोला जा रहा है, लाइक जिसको विजयी बोला जाता है, लाइक नहीं बोलते विजयी भवा, दैट्स व्हाट इट्स सेइंग. मतलब one morning the whole world looked up in surprise when Japan one morning the whole world looked up in surprise when Japan broke through her walls of old habits in a night and came out triumphant. मतलब एक नाइट, एक अचानक एक दिन जापान अपने जो पुराना आदत था, पुराना हैबिट्स था, पुराना जो ओल्ड ट्रेडिशंस था, उसको ब्रेक करके एक न्यू मॉडर्न जापान हो गया एंड विक्टोरियस होके खड़ा हुआ. तब पूरा दुनिया उसको देख रहा था. It was done in such an incredible short time that it seemed like a change of dress and not like the building up of a new structure. मतलब ये इतना जल्दी हुआ, ऐसे लगा कि इट चेंज अ ड्रेस, एंड ऐसे नहीं लगा कि एक नया बिल्डिंग टाइप का बना या एक नया लाइक स्ट्रक्चर बनने जैसा टाइम नहीं लगा. एक ड्रेस चेंज करने का जैसे हम लोग को फील आया, लाइक अचानक से चेंज हो गया. अचानक जापान भी ऐसे था, अचानक से जापान लाइक इतना मॉडर्न कंट्री का कैसे बन गया. दैट्स व्हाट ही इज सेइंग. शी शोड द कॉन्फिडेंट स्ट्रेंथ ऑफ maturity and freshness and infinite potentiality of new life at the same moment. She showed the confident strength of maturity and the freshness and infinite potentiality of new life at the same moment. तो जापान स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, मैच्योरिटी एंड फ्रेशनेस के साथ साथ इनफाइनाइट पोटेंशियलिटी ऑफ न्यू लाइफ एक ही टाइम पे दिखाया. मतलब मैच्योरिटी दिखाया, फ्रेश एनर्जी दिखाया, इनफाइनाइट पोटेंशियलिटी दिखाया एंड कॉन्फिडेंस दिखाया एट द सेम टाइम. The fear was entertained that it was a mere freak of history, a child's game of a child's game of time, the blowing up of a soap bubble, perfect in its rondeur and coloring. The fear was entertained that it was a mere freak of history, a child's game of time, the blowing up of a soap bubble, perfect in its rondeur and color. मतलब सब यही सोच रहे थे कि ये एक ही बार हुआ है, ये और नहीं होगा, या ये एक लाइक मेयर हिस्ट्री में एक ही बार लाइक हिस्ट्री में एक फ्रीक टाइप का है, लाइक एक अचानक एक हो गया कैसे, ठीक है, एक सोप बबल जैसा है, लाइक जो कि परफेक्ट है, पर लाइक इट हैपेंस वेरी सडनली. दैट्स व्हाट इट्स सेइंग. बट जापान हैज प्रूव्ड conclusively that this sudden revealment of our power is not a short-lived wonder, a chance product of time and tide thrown up from the depth of obscurity to be swept at the next moment into the sea of oblivion. तो सब सोच रहा था कि ये एक सोप बबल जैसा है, अभी बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है एंड अभी फट जाएगा, मतलब अभी लाइक सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लाइक अब फिर से लाइक जापान नीचे आ जाएगा, मतलब फिर से कोई नया टाइड आएगा तो ये सारे लाइक नीचे चले जाएगा बेसिकली, राइट. पर जापान प्रूव किया कि दिस इज़ नॉट अ शॉर्ट लिव्ड वंडर, रादर इट वाज गॉन स्टे. ये सालों के लिए रहने वाला है. The truth is that Japan is old and new at the same time. She has a legacy of ancient culture from the East, the culture that enjoins man to look for the true wealth and power in his inner soul, the culture that gives self-possession in the face of loss and danger, self-sacrifice without counting the cost of hoping for gain, defiance of death, acceptance of countless social obligations that we owe to men as social beings. तो क्या 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 बोल रहे हैं?
द ट्रूथ इज जापान इन द सेम टाइम एक ओल्ड एंड एक न्यू कल्चर है. शी हैज़ अ लेगेसी ऑफ एंशियंट कल्चर फ्रॉम द ईस्ट, मतलब ईस्ट का एंशियंट कल्चर का लेगेसी भी जापान के पास है. द कल्चर दैट enjoins मैन टू लुक फॉर इट्स ट्रू वेल्थ एंड पावर इन हिज इनर सोल, जो अपने एक इंसान को अपने आप का अंदर से अपने अपने अंदर में जो एनर्जी एंड वेल्थ है वो उसको लाइक झांकने के लिए मदद कर सकती है. द कल्चर दैट गिव सेल्फ पोजिशन इन द फेस ऑफ लॉस एंड डेंजर, एक कल्चर जो लॉस एंड डेंजर के मुंह में लाइक सेल्फ पोजिशन या सेल्फ पोजिशन देने का लाइक हेल्प करती है. सेल्फ सेक्रीफाइस विदाउट काउंटिंग द कॉस्ट और होपिंग फॉर गेन एंड डिफाइंस ऑफ डेथ, acceptance of countless social obligations that we owe to men as social beings. मतलब एक कल्चर जहाँ पर हम लोग को काउंटलेस सोशल ऑब्लिगेशंस रहता है. ये सारे सोशल ऑब्लिगेशंस ये सारे सोशल ऑब्लिगेशंस हम मतलब जापान को था एज अ एंशिएंट कल्चर, बट इन द सेम टाइम in a word, modern Japan has come out to the immemorial East like a lotus blossoming its easy grace, all the while keeping it firm hold upon the profound depth from which it sprung. मतलब जापान जो मॉडर्न जापान था वो ऐसे एक था कि लोटस जैसे, उसका एक फर्म लाइक बैकग्राउंड था, एक फर्म लेगेसी था, बट इन द सेम प्लेस इट इज़ डेलिकेटली स्प्राउटिंग इटसेल्फ विद इन द डर्ट. ओके, लाइक उसका एक अपना लाइक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, बट इन द सेम प्लेस इट्स very new and very delicate, which was all along like within the flower. In Japan, the child of ancient East has also fearlessly claimed all the gifts of the modern age for herself. मतलब जापान जो कि एंशियंट ईस्ट का चाइल्ड है वो सारे गिफ्ट्स जो कि मॉडर्निटी के वजह से मिलता है सारे गिफ्ट अपने लिए क्लेम किया है. She has shown her bold spirit in breaking through the confinements of habits, useless accumulation of lazy mind, which seeks safety in its thrift and its locks and keys. She has shown her bold spirit in breaking through the confinement of habits, मतलब जो हैबिट्स का चार दीवाली है उसको तोड़ने के लिए जापान सक्सेसफुल हुआ. यूजलेस एक्यूमुलेशंस ऑफ लेजी माइंड, जो लेजी माइंड जो कि माइंड है पर कोई काम नहीं करता है वो माइंड का एक्यूमुलेशन को तोड़ पाया. विच सिक्स सेफ्टी इन इट्स थ्रिफ्ट एंड इट्स लॉक्स एंड कीज, मतलब अपने जो घर है अपने थ्रिफ्ट है उसी में लाइक जो सेटिस्फाइड रहने चाहते हैं उसको ब्रेक थ्रू करके एक रेवोल्यूशनरी मॉडर्निटी ला पाया. Thus she became thus she has come in contact with the living time and has accepted with eagerness and aptitude the responsibilities of modern civilization. Thus she has come in contact with the living time and has accepted with the eagerness and aptitude the responsibility of modern civilization. And इस ऐसे ही अभी का मॉडर्न टाइम का मतलब द टाइम व्हेन ही वाज राइटिंग द स्टोरी उस टाइम का कॉन्टैक्ट पे जापान आ पाया एंड एक्सेप्ट किया जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ईगरनेस एंड एप्टीट्यूड के साथ. दिस इट इज़ व्हेन हैज़ गिवन हर टू रेस्ट ऑफ एशिया. वी हैव सीन दैट द लाइफ एंड द स्ट्रेंथ आर देयर इन अस, ओनली द डेड क्रस्ट हैड टू बी रिमूव्ड. मतलब जो डेड आदत का जो बैरियर है जो क्रस्ट है उसको रिमूव करना पड़ेगा. हम लोग के अंदर भी ये है, हम लोग के अंदर भी ये स्ट्रेंथ है, ये एनर्जी है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू ग्रो अगेन, टू लाइक सी द वर्ल्ड अगेन, टू ग्रो इनटू मॉडर्निटी, टू लाइक मेक न्यू अचीवमेंट्स राइट एज अ कंट्री. पर ये जो हार्ड डेड क्रस्ट हो चुका है उसको हटाने की ज़रूरत है. वी हैव सीन दैट taking shelter in death itself.
वी हैव सीन दैट टेकिंग शेल्टर इन द डेड इज डेथ इटसेल्फ। मतलब हम लोग जब किसी मरे हुए, किसी पुराने के शेल्टर लेने का कोशिश करते हैं अपने बोस्ट करने के लिए, अपने बड़ापन दिखाने के लिए, तब उसका मतलब होती है कि हम लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। And only taking all the risk of life to the fullest extent is living. लाइफ का रिस्क लेके सारे एक्सटेंट ऑफ अचीवमेंट्स को पाने का कोशिश करना, सारे रिस्क लेना अपने लाइफ पे, सारे एडवेंचर्स करना, इसी को बोलता है फुलेस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग, फुलेस्ट एक्सटेंट ऑफ लिविंग। मतलब वही जीने का सबसे फुलेस्ट एक्सटेंट है। ओके, आज के लिए यहीं तक है। आई थॉट कि मैं 100 पेज पढ़ेंगे, हम कुछ 11 पेज पे हैं। दैट इज़ कूल अगेन। हम एक्चुअली नेशनलिज्म इन जापान से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रीम, इट माइट बी टुमारो, इट माइट बी डे आफ्टर टुमारो, आई डोंट फकिंग नो। ओके, मैं आज के लिए चलता हूँ। बाय बाय फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट एक्चुअली एडिट करके इस पोर्शन से लेंगे, बट दैट्स इट। चलो बाय।